Hello, this is Mars. I am a YouTuber and for this time I am very serious to make this video. ये जिस चैनल पे आ रहा है ये चैनल I made at the beginning of this year and मेरे aims थे कि इस चैनल में मैं वर्क के breakdowns दिखाऊंगा, lifestyle vlogs बनाऊंगा थोड़े बहुत and casual videos बनाने थे, self talk videos बनाने थे बहुत सारे. Although I made a lot of videos but truly I never worked on them and surprisingly right now it is like almost the end of the year and मैंने उस चैनल पे सिर्फ 2 videos बनाए which is not fair I think and yeah I truly want to make a comeback this time. Oh, sidewise बता दूं मैं, if you guys don't know, I'm also a rapper. I also make music which I have stopped making. It's not that I will never continue, I will never make music anymore. I will do for sure, but अभी के लिए I am not in the state to do anything. I'm mentally exhausted and ये सब जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें. मैं अभी बहुत ही एक मेंटली लोएस्ट स्टेज पे था थोड़े दिन पहले तक. हाँ, बट एज टाइम गोज ना तुम्हें एक कंक्लूजन में आना होता है अपने लिए. हैव टू कम टू एन कंक्लूजन फॉर योर सेल्फ क्योंकि यू कैन नेवर स्टे फॉर एवर डिप्रेस्ड और यू कैन नेवर फील दैट सैड फॉर समथिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी टाइम सून और यू आर नॉट गोइंग टू गेट एट ऑल. इन कुछ दिनों में ना ये सारे इंसिडेंट जो मेरे साथ हुए प्लस फैमिली प्रॉब्लम्स है बहुत सारे, उन सब ने ना मुझे कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट में डाल दिया था जहाँ पे ना मुझे पता अपने काम पे भरोसा नहीं हो रहा था बिल्कुल भी. ये सब चीज़ों के वजह से समवेयर आई फेल्ट कि शायद मैं सही से काम नहीं कर पाता या फिर मेरे काम में कुछ फ्लॉ है. ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगे दिमाग में एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ वेरी मेंटली ब्रोकन ह्यूमन बीइंग आई हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन मी. बहुत जल्दी टूटना मेरी मेरी आदत है बट दिस टाइम एवरीथिंग इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन फॉर मी. ऑल ऑफ दिस थिंग्स जो भी अच्छे बुरे चीज़ें हो रही है ज़िंदगी में, एक बार के लिए ना ये सब चीज़ें टैकल करना बहुत आसान होता है और एक बार के लिए व्हेन यू डोंट हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ उस पॉइंट पे ना यू कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग. कोई भी स्टेप लेना, कोई भी कुछ करना तुम्हारे लिए टफ होता है बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ एनी मोर. यू फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ और यू हैव समथिंग बैड इन यू जिसके वजह से आज चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रहा है तुम्हारे लिए. मेंटली ना कुछ बातें इफेक्ट की है पता है मुझे. बहुत सारी बातें बताई गई ड्यूरिंग सम मीटिंग्स कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट वर्क दैट गुड, आई एम नॉट एफिशिएंट इनफ. मैं 7-8 साल भी इस फील्ड में काम करूंगा तो भी अगर मैं 50,000 के ऊपर मेरी सैलरी अगर मैं कर लूँ बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए. बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिला है मुझे एंड इफेक्ट हो जाती है भाई. पता नहीं है लुक तुम्हें भी नहीं पता कौन सा चीज़ तुम्हें इफेक्ट करेगा कौन सा चीज़ नहीं करेगा एंड ऑल ऑफ दिस अफेक्टेड मी अलॉट क्योंकि ऑलरेडी आई एम हैविंग अ सेल्फ डाउट ऑन माई सेल्फ. ऊपर से इतनी बुरी बुरी बातें सुनना ये वो. और मैं एक ऐसा इंसान हूँ ना जिसके लिए ये फाइनेंशियल चीज़ें उतना मैटर नहीं करता है बट मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ इफेक्ट करता है दैट इज मेंटली थिंग्स इफेक्ट्स मी अलॉट क्योंकि आई हैव अ वेरी बैड पास्ट. मतलब मुझे ऐसे फील मुझे घुटन सा महसूस हो रहा है जब से मैं ना घर में बैठा 2 हफ्ते से. आई एम नॉट वर्किंग, आई एम लाइक अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयड होना भी सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें. अभी एज भी क्या ही है, लोगों का यही कहना है. हर एक बंदा वैसे यही कहता है ब्रो एज भी क्या है तेरा. यो फक यू, आई डोंट लाइक दैट शिट, आई डोंट लाइक हियरिंग दैट शिट. आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ माई सेल्फ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं भी अपने पापा की तरह बन जाऊँ फ्यूचर में. तो मैं वो चीज़ मेरे को हॉरीफाई करता रहता है हमेशा. मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि भाई नहीं जो भी है जल्दी जितना भी. आई एम स्केयर्ड ऑफ डेथ, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ डेथ. आई फील दैट आई विल डाई वेरी यंग. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई कि भाई मेरे को जितना मेरे से हो सके आई विल डू जितने जल्दी हो सके. आई वोंट टेक मच टाइम कि भाई 4 साल ये करना है, 4 साल वो डिग्री निकालना है. उतना वेट मेरे से नहीं हो पाएगा भाई. हु नोज, आई एम नॉट मेंटली, आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन मेंटली. मैं बहुत कमजोर हूँ भाई. तो इन सब के चलते आई एम नॉट, आई डोंट नो, आई कांट हैंडल अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट दिस टाइम है ना, दिस टाइम गॉड इज नॉट विथ मी. आई फील पता नहीं भाई बहुत सारे थॉट्स है अभी मेरे दिमाग में. बहुत एक अलग सा मैं हो गया अभी. बहुत ही एक अलग सा, बहुत एक लाइफ का प्रेशर सा आ चुका है अभी जिंदगी में. मतलब नोबडी इज फोर्सिंग मी टू डू एनीथिंग है ना. घर वाले बहुत ही है कि ठीक है यार अभी टाइम है बहुत ज़्यादा बट मेरे को वही तो टाइम वेस्ट नहीं करना. मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे ऐसे फील होता है. आई हैव सो लिमिटेड टाइम. 5-4 साल है बस, इतना है. मेरे तो क्या ही पता ज़िंदगी किधर जाए क्योंकि एक नेगेटिव टेंडेंसी है मेरे में. बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत हद पार नेगेटिविटी है मेरे माइंडसेट में. उन सबको टैकल करना भी टफ है. यू नो विजिटिंग बैक कुछ दिनों पहले तक, कुछ हफ्तों पहले तक, ऑल ऑफ द लोएस्ट दैट आई एम फीलिंग वाज रियली टेकिंग ओवर मी एंड आई ट्राइड कि दिस शिट शुड नॉट लाइक टेक ओवर माई सेल्फ एंड इट शुड नॉट इम्पैक्ट मी लाइक दैट. बट यू नो व्हाट, विद टाइम यू फेस वन थिंग एंड एक पे एक चीज़ें होती रहती है ज़िंदगी में जो कि स्लाइटली इफेक्ट करता है और हम ना उन चीज़ों को उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते. वी जस्ट गो लाइक कि ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है. लेट मी चेक फॉर वंस कि वीडियो हो रहा है कि नहीं. आई जस्ट वांट टू मेक इट श्योर क्योंकि यस इट इज
going all set. Okay, so what I'm saying was कि यार हम उन चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट छोटी छोटी चीज़ें है ना, हर्ट होते होते इंसान को इट जस्ट इफेक्ट्स समवन सो बैडली. दैट्स व्हाट आई फील. क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें कब इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, यू विल नेवर नो. एंड दैट वाज समथिंग, यू नो, सम सॉर्ट ऑफ अ impact that I had in my life. Getting fired from a job is not that big of a deal, you know, क्योंकि I never wanted that job this bad. But getting a question mark that whether I'm good at doing what I do is something that really brings a lot of question to yourself. And that is what happened, I feel. I took a lot of time. I'm still in the figuring out phase, and I'm conscious about a lot of things. Cause recent days में ना जिंदगी में बहुत changes आई है, बहुत सारी चीजें which I was never worried about, which I never thought that this should be a topic जिस पे मैं कभी इतने ध्यान से सोचूंगा कि ये भी important हो सकता है जिंदगी में. वो सब चीजें एक पे एक बहुत सारी चीजें आई है जिंदगी में. So it is kind of overwhelming for me right now. Look, I know I'm not saying everything directly क्योंकि मुझे नहीं बताना है कि this is a way lot of personal stuff. So what I feel कि जो कुछ भी हुआ है, after that I tried exploring a lot of things. मैं 3-4 दिन बहुत घूमा बाहर अकेले. I spent a lot of money just to make myself feel कि I worth something. I went out with my family in this puja. Although मेरा पूजा खराब हो चुका था एकदम ही, that I was like fired from my job, and I didn't stop there. मैंने enjoy किया, मैंने time को, you know, when something bad happened, don't make it affect everything. That's what everybody told me कि कुछ गलत हुआ है तो ठीक है, अब उस चीज को लेके बैठे मत रहो, एंड जो अच्छी चीजें चल रही है उनको इफेक्ट मत होने दो. एंड आई थॉट कि या दे आर राइट समवेयर, आई शुड नॉट डू इट. तो मैं अपने फैमिली के साथ घूमने गया बाहर. आई एंजॉयड विद देम एंड आई वाज हैप्पी. आफ्टर दैट आई बॉट एन एसएसडी व्हिच आई वाज थिंकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम दैट मैं अपने लैपटॉप को थोड़ा सा अपग्रेड करूंगा. ओके, सो ये है मेरा एसएसडी. मैंने फाइनली इंसर्ट कर दिया खुद से. सबसे चैलेंजिंग पार्ट है कि मैं एक चाकू यूज़ कर रहा हूँ एज ए स्क्रू ड्राइवर, जो कि सच्चे में बहुत ही टफ है क्योंकि सेंसिटिव चीज़ें हर एक कहीं पे कुछ लग जाए ना. और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एक स्क्रू लगाना पड़ा मुझे जो कि अवेलेबल नहीं था, इस लैपटॉप पे अवेलेबल नहीं था. तो मैंने अपने जो स्क्रूज मैंने निकाले इसको खोलते वक्त इसके बैक पैनल में से, उन्हीं में से एक स्क्रू यूज़ किया. तो एक स्क्रू मिसिंग रहेगा मेरे बैक पैनल में, विच इज सैड, बट ठीक है, करना पड़ेगा इसको हमें मैनेज. Yeah, so I did things. मुझे लगा कि शायद ये सब करने से, शायद बाहर जाने से, spending my money and enjoying things will help out. But to be honest, none of that really helped out. I won't say it haven't helped me out, but somewhere still, when I'm sitting down here and I'm looking at my PC, I don't feel that urge to make something. I created a page. I thought I will create content on that Instagram page, but still I haven't started anything. मतलब कुछ incidents होते हैं, and you know that when you hit a very low point in your life, तो वो चीज कहीं ना कहीं mentally इंसान को drain कर देता है, unless you're opening up yourself to few trustworthy peoples. And yeah, one more thing that I want to say कि recently 2 days back I saw this Adobe का 2025 version वाला update, and that was really good, and it suddenly made me feel कि there was a time when I used to use crack softwares and I was so productive, I was so creative that I have that urge to create something and make something. But right now I'm having the latest version of stuff, but I'm not doing anything, which brought a real question to me. What's going on with me? क्या मेरा मन उठ चुका है इन काम से? क्या मेरा creativity खत्म हो चुका है? Because I had stopped feeling like I should make something. I stopped making music. I had almost like cut myself off from a lot of people, and this is hard. This is really hard to describe. ये जो एक trap feel होता है ना अपने आप को, this is what is really eating me from inside. And at this point, I don't know, I don't have a solution. So I discussed all of this problem with my family. Then I decided that I should go out of this city and should find a work somewhere and should do something. You know, this step is also scaring me a lot. I have submitted my CVs, बहुत जगहों से call भी आया, but things were not setting. बहुत जगहों से rejection भी मिला because they wanted to have a graphic designer, and I really have very less work in graphic designing. And I don't know, I'm just very overwhelmed with my life right now. बहुत कुछ हो चुका है इन दिनों, बहुत changes हो चुके हैं, बहुत changes अपने में आ चुकी हैं. And sometimes you just like have this question कि क्या हो रहा है, सही
हो रहा है गलत हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं गलत कर रहा हूँ या फिर मेरे साथ गलत हो रहा है, या फिर ये चेंज फॉर गुड है फॉर बैड है, विल दिस चेंज टेक थिंग्स दैट आई हैव दैट आई एम रियली अटैच्ड टू अवे फ्रॉम मी, बहुत क्वेश्चंस आती है ना। एंड व्हेन देयर आर थिंग्स दैट यू कैन टॉक अबाउट, यू नो, मतलब वो तुम्हारे लिए बहुत मैटर करती है, बट तुम ऐसे ही नहीं बोल सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट माई फैमिली रियली मैटर्स टू मी एंड आई कैन say this very clearly, or my friends really matter to me, I can say this, but when there are some things that like that will sound very petty to people, तो उन चीजों को हम नहीं बोल सकते लोगों के सामने। that thing is also one reason I feel that makes me feel weird all the time, कि मतलब वो अंदर ही रह जाता है वो एक सवाल की तरह, and there is no answer bro at all। I feel this is what it feels like, being trapped by your mind, so much fucked up thing is happening mentally right now। I'm not even saying any sensible thing, or even if I'm saying a sensible thing, I can't really figure out, I can't escape from this thought, you know। इस पूरे conversation में तुम्हें कहीं पे भी दिखा कि that I found escape from that maze? नहीं, I'm still stuck at that maze। and yeah, this conversation actually summarizes a lot of things। this is a Mars that nobody have ever seen, to be honest। मैं खुद बोल रहा हूँ all the time, whenever I used to talk, whenever I used to have some communication with anyone, even if I'm having it with myself, I used to have a conclusion bro, but right now I'm somewhere trapped in my mind and I just can't figure out what's the reason। I don't know how will all of this fix, but I'm just like making this video, and I will make sure कि मैं इस वीडियो को बनाऊं पूरी तरह से। I have a lot of things to show, I have recorded a lot of things, and I will just make something। I won't put a lot of effort in order to make this video engaging or something, क्योंकि ये बहुत ही general video है भाई। I just want to put this conversation out, and someday I know this is like a phase in my life, this is just a phase यार, एक दो महीने की बात है, या फिर थोड़ा और टाइम भी रहेगा तो ठीक है, बट थोड़े टाइम के लिए रहने वाला है। एंड आफ्टर आई ओवरकम दिस थिंग ना, आई विल लर्न समथिंग, बहुत ही कुछ बड़ा लेसन मिलेगा which will really be helpful and be like worth of feeling this much down, this much low। okay, I mean, this is all I wanted to say। and to future Mars, if you're seeing this, make a part 2 of this video and conclude all of this conclude all of this for sure। stay blessed and write your diary yaar, you are missing out your diary a lot। well, I will show you my diary, ठीक है। मैं मतलब ऐसे दिखाऊंगा तो नहीं। I have a diary, although I was never a guy who writes or who reads book, who watches movie। I was never this kind of a guy, ठीक है। There are reasons why I am changing, but this is a diary that I am writing since कब से 4th September। 4th September is the day that I started writing this diary, and it's a pretty cute one, a really like attractive one for me। anyways, I mean, I will finish up my show reel right now and I will upload that show reel nowhere, क्योंकि मैं ये कंपनीज को दिखाने के लिए बना रहा हूँ, एंड ऑल्सो टू सबमिट इट ऑन माई इंस्टीट्यूट फॉर द सर्टिफिकेट। बहुत सारी बातें की है मैंने आज। फॉर श्योर दिस वीडियो वोंट मेक सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट ट्रस्ट मी, ये वीडियो अभी सेंस नहीं बना रहा है, बट आफ्टर सम टाइम दिस विल फॉर श्योर मेक सेंस, एंड आई विल मेक श्योर कि ये सेंस बनाए। आई हैव डिसाइडेड टू मूव अवे फ्रॉम दिस प्लेस, एंड बीइंग ऑनेस्ट, आई एम अ पर्सन जो नॉर्मली कुछ नहीं बोलता है। नॉर्मली आई वोंट से और आई वोंट क्लेम कि मैं ये करूँगा, मैं वो करके दिखाऊंगा, ये वो ऐसी चीज़ें मैं नहीं बोलता, बट व्हेन आई से समथिंग ना, आई रियली मीन इट, एंड मैं इतना डीपली सोच के बोलता हूँ कि दैट आई विल फॉर श्योर डू दिस, आई विल फॉर श्योर। वो मेंटालिटी लेके चलता हूँ मैं, क्योंकि फॉर मी सेइंग एनीथिंग एंड लाइक इफ आई नो समहाउ देयर विल बी अ सिचुएशन जिधर मैं ना कर पाऊँ ये चीज़, तो आई कीप इट ऑन माई माइंड ऑल द टाइम कि ऐसा भी हो सकता है। दैट्स व्हाई आई वोंट डू इट। आई थिंक वी शुड रैप दिस वीडियो हियर, एंड कुछ कमेंट करके बताओ मुझे व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी, एंड टेल मी if you have ever felt this kind of a confused, although I know a lot of people must have been through this thing। I always had a very isolated nature, मैं किसी से interact नहीं करता था। I don't, maybe it is because कि मैं थोड़ा खुल रहा हूँ अभी, मैं चीज़ें explore कर रहा हूँ, तो शायद मेरे लिए थोड़ा overwhelming इसीलिए हो रहा है ये phase, क्योंकि मैं जिंदगी भर अपने आप को मैंने बहुत isolated करके रखा था। and yeah, I mean, my reason for keeping myself that much isolated was
because I never had good friends. I never had good experiences in friendship, and I don't know. I'm a very sensitive human being. That's why I don't really feel making friends like that. It's not even about making friends. It's just in general. I don't feel that urge to talk to someone and like just to interact with them. क्योंकि I'm just scared of this world. नहीं, ऐसा नहीं है. इन पर्सन अगर कोई मुझे जानता है ना, दे मस्ट हैव दिस कि ये बंदा बिल्कुल भी बात नहीं करता है, एकदम शांत रहता है. नहीं ब्रो, आई हैव अ लॉट टू एक्सप्रेस. देयर इज अ पार्ट वन, एंड बिफोर dying for sure I will make a part 2 of this video, and I will make sense in the part 2. That video will make sense. I just need that reason of doing anything. I don't have much reason. I don't have dreams. That's why I'm focusing on having a dream right now. I'm focusing on having a dream, yes, for sure. This is the thing that I'm really invested into. जिंदगी बहुत बदल चुकी है यार. Anyways, yeah, बहुत बहुत बातें कर दी मैंने. I should just end this video here. Yeah, that's all. I don't want to say anything else. Bye.